नमस्कार, मी सोमनाथ. आपण मागच्या वेळेला इयत्ता 10वीचा 5.1 काही उदाहरणं सोडवली होती. आता जो पुढचा 5.2 हा जो एक्सरसाइज आहे त्यामध्ये आपण 3 सूत्र पाहणार आहोत. तर पहिलं सूत्र आहे की ज्यामध्ये आपण म्हणतो की सेक्शन फॉर्म्युला. तर हा थोडासा इंग्लिश, हिंदी अशा भाषांमध्ये घेणार आहे. तर असं कारण आहे की काही विद्यार्थी आपले हिंदी मीडियमचे आहेत, काही सेमी इंग्लिशचे आहेत आणि काही इंग्लिश मीडियमचे आहेत. तर या तिघांनाही समजावं हा उद्देश आपण ठेवूया. तो हम आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2. तो चलिए शुरू करते हैं. तो 5.2 में हमें 3 फार्मूला हमें देखने हैं: सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला. बिफोर दैट, what is section formula we will see. Section, that means when we draw a line having point A and B, but any one point which divide this AB line into two parts or two sections. Suppose there is a point P, so P divides AB into two parts having different ratio. Suppose this is 2 and this is 1. So this is the one part and this is the double of that PB. So I am writing 2. So these are the two sections. But if we know the coordinate of A, that is x1 y1, and coordinate of B, x2 y2, using these 2 points we want to find out coordinate of point P, x and y. So how we can find out? By the formula of section formula. So what is section formula? So point P having x coordinate, तो x coordinate हम ऐसे ढूंढ सकते हैं: m x2 plus n x1 upon m plus n. सिमिलरली उसका y कोऑर्डिनेट हमें ढूंढना है, तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो आपको ये सवाल आया होगा कि what is m and n. So m means the ratio of two ratios, that is m and n. So 2 is m and n is equal to 1. तो हम m is to n इसको हम 2:1 लिख सकते हैं कि इसका रेशो जो है वो हमें 2:1 में वो लाइन डिवाइड करती है. सो यूजिंग दिस सेक्शन फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. सो लेट्स वी विल सॉल्व. तो क्वेश्चन 1 उसमें हमें देखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ point P which divides line AB into 2:3 ratio. So A and B we know 1 -1 7 and B 4 -3. Ratio 2:3, तो 2 and 3 और XY हमें ढूंढना है. So let's write x1 y1 and x2 y2. So A having x1 is equal to -1 and y1 is equal to 7. Similarly from point B, x2 is equal to 4, y2 is equal to -3. We know the ratio, that is m is to n, 2:3. By using the formula, that is section formula, so x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. First we will find what is x. x को हम ढूंढते हैं. m हमें पता है, m की वैल्यू है 2. 2 into x2 plus n is 3, so 3 into x1 upon m plus n, so 2 plus 3
So 2 4s are 8, 3 1s are 3, plus minus minus upon 5, 8 minus 3, 5 upon 5, so 5 1s are 5, 5 1s are 5. तो x की वैल्यू हमें मिल गई, x इज इक्वल टू 1. सिमिलरली y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. m is 2 into y2 minus 3 plus n is 3, y1 is 7 upon m plus n, that is 2 plus 3. So 2 3s are 6, so minus 6 plus 7 3s are 21, 2 plus 3 5, minus plus minus, so 21 minus 6 15 upon 5, so 5 1s are 5, 5 3s are 15, therefore y is equal to 3. Therefore we got x and y. Coordinate of point P is x is equal to 1 and y is equal to 3. P x is equal to 1 and y is equal to 3. So these are the coordinate of point P which divide the line AB into 2:3 ratio. So this is the one example. Similar examples of 5.2 you can solve by using the same method, same formula. So you can take screenshot. We will see the another example. अभी क्वेश्चन नंबर 2 में p -2 -5, q is 4 3 and we know the ratio a is to b is equal to 3:4. तो सेक्शन फार्मूला अगर आपको पता है तो आप उसके यूज़ से कोई भी एग्जांपल आपको अगर पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन हमेशा m और n ही दिया होगा ऐसा नहीं है. So there will be some in example a or b. Now we will solve same but as a taking a and b. सेक्शन फार्मूला ही यूज़ करेंगे लेकिन m की जगह a यूज़ करेंगे और b n की जगह यूज़ करेंगे. So let's see. First x1 y1, p having x1 y1, so -2 is x1 and y1 is -5. From q x2 is equal to 4 and y2 is equal to 3. We know the ratio a is equal to 3 and b is equal to 4. Let's find out coordinate of the point which divides. Let's find the coordinate of point which divide PQ into 3:4. So x is equal to, now I am taking a and b. So m की जगह हम अभी a यूज़ करेंगे. a x2 plus b x1 upon a plus b. a 3, x2 4 प्लस b की जगह है 4 और x1 -2. a plus b, so 3 plus 4, 3 4s are 12, 4 2s are 8 plus minus minus upon 3 plus 4 7. So 12 minus 8, 4 upon 7. 4 upon 7 we cannot divide, so keep as it is. We got x is equal to 4 by 7. Similarly y, a y2 plus
by1 upon a plus b. A is 3, y2 is 3 plus b 4 into y1 minus 5 upon 3 plus 4. 3 3s are 9 plus minus minus 4 5s are 20. 3 plus 4 7. 9 minus 20, that is 20 minus 9 11. So larger or greater number is 20, so sign of greater number minus 11 upon 7. Value of y is equal to minus 11 upon 7. The coordinate of point which divide PQ are x and y. X is equal to 4 by 7 and y is equal to minus 11 by 7. So these are the two coordinates. So I hope you are we know about the section formula, but taking as a m that is a and n that is b. अभी कुछ एग्जाम्पल में हमें रेशो पता नहीं है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट x और y अगर हमें पता है तो हम रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो एग्जांपल देखिए. नाउ फिर एग्जांपल 4, इट्स अ डिफरेंट p एंड q. वी नो कोऑर्डिनेट्स p minus 3 10, q 6 minus 8, and t which divides pq. So having coordinate minus 1 6. But we don't know what is the ratio m is to n. So we want to find out ratio of the section. Let's find out. First, what are the x1 y1? x1 is equal to p के coordinate आएंगे minus 3, y1 10. x2 is equal to 6 and y2 is equal to minus 8. M is to n we don't know, but x and y we know about coordinates of t. X and y section formula mx2 plus nx1 upon m plus n. Y similarly my2 plus n y1 upon m plus n. So x and y we know from the point t. So x that means minus 1 हम यहाँ लिखेंगे. m पता नहीं है तो m as it is. x2 6 plus n पता नहीं है. x1 minus 3 upon m plus n. पहले हम x का सॉल्यूशन करते हैं. m plus n ये डिवाइड है, लेकिन when it goes from right to the left side, so it is multiplied with this minus 1. So minus 1 multiplied by m plus n. So m into minus 1 minus m plus n, it is also minus n. इतना तोड़ दिसलं म्हणजे बस. हाँ करा. अब इस फॉर्मूला में m into 6m plus minus minus 3 into n 3n, m plus n हमने ये डिवाइड था यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. m इंटू माइनस 1 माइनस m, n इंटू माइनस 1, n इंटू माइनस 1 minus n. Now we will like terms. So m n n. So we divide these similar terms. I बोल लो को.
m similar terms we will take on the same side. So keep minus m on left side. We will take 6m from right to left. Sign of 6m will be changed. So plus 6m, it will become minus 6m is equal to minus 3n as it is. So minus n, taking from left to right, so minus n will become plus n, minus minus plus, so 6 plus 1 7 m, sign of greater number minus, minus plus minus, so 3 minus 1 2 n, again sign of greater number minus 2m, but we want ratio, therefore m upon n. So take n from right to left, keep m as it is. So m, n is into, so it will become divide is equal to minus 2 यहाँ पर रहेगा, यह माइनस 7 इंटू है तो यहाँ डिवाइड हो, तो माइनस माइनस कैंसल, रेशो हमें मिल गया m अपॉन n इज इक्वल टू 2/7. हमें m/n मिल गया x सॉल्व करने के बाद ही, लेकिन दोनों सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सेम आंसर वहाँ पे भी आ सकता है. कि हम देखते हैं कि y अगर हमने सॉल्व किया होता तो m/n 2/7 ही आता है क्या. So let's see y, we know y that is 6 is equal to m पता नहीं है, m into y2 minus 8 plus n पता नहीं है, y1 10 upon m plus n. Again m plus n is divided to right side. When it is going from right to left, so it is into, so इसको मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू 6 6m, n इंटू 6 6n इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 8m प्लस 10 इंटू n 10n. We will take similar terms on the same side. So 6m keep as it is. Take minus 8m from right to left. So minus will become plus 8m is equal to plus 10n as it is, plus 6n, take from left to right, plus 6n minus 6n. 6 plus 8 14m, 10 minus 6 4n. We are taking like terms on the same side. So m, so n is into, so it will become divided. 4 यहाँ पे है, 14 is into will become divided. अभी 4 और 14 दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14. तो हमें m अपॉन n सेम रेशियो मिला है 2:7. यहाँ पे भी हमने वही वैल्यू मिली है, यहाँ पे भी सेम. व्हेन द रेशियो इज नॉट गिवन, वी कैन फाइंड आउट बाय द सेम फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, द रेशियोज m/n. So similar example you can solve by the using this fourth example. So the after 4 there are any other examples, but we will see in next part of our session.